अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये क्लास जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ये 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का यूनिट सेकंड वर्क पावर एंड एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड वर्क डन कि फिजिक्स का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है। सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है, मीन्स दैट कि वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट कम्स इनटू मोशन। सो मोशन तभी ये ऑब्जेक्ट मोशन में आता है जब हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, मूविंग एयर, इसका हम विंड कहते हैं। फ्लोइंग वाटर, या फास्ट मूविंग ब्लड, या हम एक रोटेटिंग व्हील के एग्जांपल ले लेंगे। रोटेटिंग व्हील या मूविंग कार। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल लेंगे, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स दे आर इन मोशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी सी विंड मूविंग एयर, अगर हम प्यारे बच्चों इसके एग्जांपल लेंगे, ये जो मूविंग एयर है, अगर हम विंड मिल में इसका काम देखेंगे, ये टरबाइन के ब्लेड्स को, ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, उनको रोटेट कराती है। सो मूविंग एयर, विंड, it is doing some work on blades of the turbine. So यहाँ पे काम हो रहा है, work is being done. अगर हम flowing water की एग्जाम्पल लेंगे, flowing water, ये भी सिमिलर काम करता है। जैसे हम पानी को किसी काफ़ी हाइट से अगर गिराएंगे, तो जैसे हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में देखेंगे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पानी में जो एनर्जी स्टोर होती है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराती है, और वो फिर एनर्जी हम जनरेटर के साथ जो टरबाइन कनेक्ट हो गए, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें लास्ट में मिलती है। सो यहाँ पे मुझे जो कहने का मकसद है कि फ्लोइंग वाटर जो है, इट इज़ ऑल्सो डूइंग सम वर्क ऑन ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। अगर हम एक फास्ट मूविंग ब्लेड की एग्जांपल लेंगे, it is also doing some work on a certain target. सो यहाँ पे ये जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस की, ऑल दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मूविंग एयर हो, विंड हो, या फ्लोइंग वाटर हो, या एक फास्ट मूविंग बुलेट हो, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर डूइंग वर्क। लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है ये तभी काम कर सकते हैं, वी नो दैट, जब इनके पास एनर्जी होगी। तो ये मोशन में है, इनके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम कहेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। EK denoted by EK. So dear students, all the objects, जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, मूवमेंट करते हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी के कारण वो कोई काम करते हैं। वो एनर्जी जो इन ऑब्जेक्ट्स के साथ लेट है, व्हेन दे आर इन मूवमेंट, व्हेन दे आर इन मोशन, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि
यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये काम करते हैं, दे आर डूइंग वर्क, दे आर परफॉर्मिंग वर्क, और ये अपनी जो काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स तक जिन पे काम हो रहा है. सो एनर्जी इज being transferred during the course of work from the objects which are doing work towards the objects on which work is being done. For example, moving air, wind के पास एनर्जी है और ये एनर्जी जो है it is being transferred to the blades of the turbine. Moving water, it's having kinetic energy, this is being transferred to the blades of turbine. Fast moving blood, it is having energy, it is being transferred to a certain target. So in all these cases transformation of energy takes place, and in all these cases all these objects, they are having certain energy which we call kinetic energy, and all these three cases, due to virtue of their kinetic energy, they are performing some sort of work. So इसके बाद dear students हम पढ़ेंगे कि expression, mathematical expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy. Dear students, suppose we are having a body, its mass is m, it's moving with a velocity of u meter per second, your second inverse. Now suppose we are applying certain force, constant force. Now we are applying a constant force on this object, and this object gets displaced along the direction of force, and suppose the displacement is s, and in this object work done will be given by W is equal to F dot s. Suppose it is equation first. So we are having a certain object, its mass is m, it's moving with a uniform velocity u meter per second. Suppose we are applying a constant force F on this object gets displaced by certain distance that is represented by s. So in this case work done is equal to F force applied multiplied by distance covered. So dear students, we know that here a work is being done on this object, and during this course of work done the velocity of the object is changing, velocity is changed, and this velocity changed from initial velocity u to final velocity v. So here certain acceleration is being produced that is represented by a. So dear students, we know that force is equal to mass into acceleration. This is equation second. Amount of force, a force applied on any object that is equal to the magnitude of mass multiplied by the acceleration produced in a certain body when a certain force is applied on it. And from the equations of motion I can write that v square minus u square is equal to 2as. So I need the value of s. I can write s is equal to v square minus u square upon 2a. This is equation third. So putting the value of f from equation second and value of s from equation third in this equation first. So I can write w is equal to f, it is m into a into s, it is v square minus u square upon 2a. So this a gets cancelled. W is equal to 1/2 into m into v square minus u square. Dear students, suppose the object started from its stationary position. So here u is 0. When the object starts from stationary position, it means that its initial velocity is 0. So if we put here the value of initial velocity as 0, I can write w is equal to 1/2 m
into v square. So here it is the work done. We know that the work done is equal to the change in kinetic energy, or simply the work done is equal to the change in energy. So in place of work done, I can also write energy is equal to 1 by 2 m into v square. Dear students, since here the energy is associated by virtue of the motion, since here the air is moving, the energy that is possessed by the air, that is due to its movement, flowing water, the object is in motion, fast moving blood. So here the energy in such cases that is involved in the object when it is in motion, so this energy is known as kinetic energy. So in place of energy I can write ek. So ek is equal to 1 by 2 mv square. So this is the expression for kinetic energy. So dear students, so when this kinetic energy ek is equal to 1 by 2 mv square, this is the expression for this kinetic energy. So we can here say that kinetic energy is directly proportional to mass of the body. Kinetic energy जो है that is directly proportional to mass of the body, and it is also directly proportional to square of velocity of the object or body, square of the velocity. So here when mass of the body, if mass of the body is increased, kinetic energy is also increased. If velocity of the body of the object is increased, kinetic energy is also increased, but here it is square. So if it is doubled, if velocity is doubled, kinetic energy, if v is equal to doubled, kinetic energy becomes 4 times, because it is 2 square. If kinetic energy is tripled, if it is increased thrice, kinetic energy will be increased by a value of by a factor of 9 times. If the value of kinetic velocity, if velocity is doubled, kinetic energy is increased by 4 times. If we increase the velocity by thrice, 3 times, if velocity is tripled, so kinetic energy is increased by 9 times. Or if velocity is increased by 4 times, kinetic energy is increased by 16 times. So this is the relation which we get from this equation. So dear students, let we come on textbook questions. So I think the video is going to be too long. So dear students, अब हम दूसरी क्लास में इस kinetic energy जो हमने पढ़े इसके related कुछ questions हैं, इंशाल्लाह we will discuss them in next class. Thanks.